बिकॉज ऑफ माई वॉइस वर्क कई बार मैं प्रोडक्शन हाउसेस विजिट करती थी, तो हमेशा लोग मुझे देखकर ये बोलते थे आप एक्टर हो, आप एक्टर हो। मैं बोला, नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं डबिंग करने के लिए आई हूँ। अगर नहीं किया होता तो आई एम श्योर आई वुड हैव डन either an MBA or my master's degree, or I was interested in advertising, in media, and I think I had a lot of creative ideas. Definitely something related to media. आलिया भट्ट का किया था ब्रह्मास्त्र में, उनकी डबिंग की थी फॉर डिज्नी, एंड दैट वाज इन इंग्लिश। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। So Samriddhi, first of all, welcome to India Forums. थैंक यू सो मच। So Samriddhi, एक क्वेश्चन काफी टाइम से सबके दिमाग में है कि इट्स योर फर्स्ट शो एज अ लीड एक्ट्रेस, एंड इतना आसान नहीं होता है लीड कैरेक्टर पहले ही शो में मिलना। तो आपका पूरा जर्नी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप एंड अप हुए हैं बीइंग एन एक्टर। सो एक फनी स्टोरी है दैट बिकॉज ऑफ माई वॉइस वर्क कई बार मैं प्रोडक्शन हाउसेस विजिट करती थी, तो हमेशा लोग मुझे देखकर ये बोलते थे आप एक्टर हो, आप एक्टर हो। मैं बोला, नहीं मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं डबिंग करने के लिए आई हूँ। बट आई थिंक इट वॉज ऑलवेज डेस्टिन्ड टू बी लाइक दैट, एंड मैंने वहीं से ऑडिशन भी देना शुरू किया। एंड देन मच लेटर इन लाइफ आई फेल्ट लाइक आई शुड डू इट व्हेन माई फादर पुश्ड मी टू डू इट, एंड आई थिंक समहाउ लोगों को मेरे चेहरे से ऐसा लगता था मे बी आई वॉज रियली कट आउट टू बी एन एक्टर। वो बाद में मुझे रियलाइज हुआ, एंड देन दिस होल प्रोसेस स्टार्टेड। Okay, but if not an actor, क्या कुछ plans थे आपके? If not an actor, because I was very studious and I loved to study. Studies was a game. I always think of myself as an underdog. तो मुझे लगता है मैं अपने आप को underestimate बहुत करती हूँ, but I think I have a lot of potential. वो studies में भी था कि मतलब जो मेरा unpreparedness होता था वो यहाँ होता था और लोगों का preparedness यहाँ होता था, and their confidence was like we are prepared, and मेरा होता था नहीं I'm still not prepared, I'm always mugging up the last moment also. So अगर नहीं किया होता तो आई एम श्योर आई वुड हैव डन either an MBA or my master's degree, or I was interested in advertising, in media, and I think I had a lot of creative ideas. Definitely something related to media, but I think corporate में होती है ना अच्छा कर। Okay, who motivated you to be an actor? My family is really supportive, so I have to give it to them. My father, my grandmother, सब actors हैं, voice actors हैं, and they've always been behind me, pushing me, and I think they really thought that I could become an actor, and here I am. ओके, बट अगर एक्टर्स की बात किया जाए तो ऐसा कौन सा एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर्स भी हम देख लेते हैं, तो किसने इंस्पायर किया या फिर बचपन से उनके एक्टिंग्स देखकर आप सीखे हो, या फिर कोई? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आई वुड वांट टू एक्ट, मेरे दिमाग में कभी ऐसा था ही नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी ready option available for people. मतलब nobody really says, at least in my times, nobody really said that I want to grow up and become an actor. That was not something which was heard a lot, especially from your parents or something like that. मतलब मैं हमेशा बोलती थी I want to be a doctor, or I want to be a teacher, or you know those kind of answers जो हर बच्चे देते हैं. So coming back to your question, can you repeat? I lost it. ऐसा कौन सा एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर, जिसने इंस्पायर किया आपको एक्टिंग में, या उनकी एक्टिंग देख के आप सीखी है? सो ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं था. आई रियली लव सिनेमा, आई लव द इंडियन सिनेमा, एंड आई लव एक्टिंग, एंड आई लव एक्टर्स. बट ऐसा कोई while growing up there was nobody, but if I had a crush on somebody, it's Hrithik Roshan. So as a child I really had a crush on him, and I was really bummed जब Hrithik Roshan and करीना कपूर की शादी नहीं हुई थी, because they were paired so much in so many movies that I watched. मैं प्रेम की दीवानी हूँ, कभी खुशी कभी गम, so many others. So I really thought that इनकी शादी क्यों नहीं हुई, who's Suzanne? Okay, अभी आप एक्टर बन ही चुके हो, तो कभी ऐसे मैनिफेस्ट किया होगा कि इनके साथ काम करना है मुझे? Definitely. Like I want to work with Alia Bhatt, I want to work with Ranbir Kapoor, I want to work with Amitabh Bachchan ji, Shah Rukh Khan. So there are many actors, and I'm just waiting to get the opportunity to work with them. Okay, but very few people knew that आप इसके पहले आपने मेंशन किया कि आप एक वॉइस आर्टिस्ट थी, राइट? जी. तो उसके बारे में जानना चाहेंगे एग्जैक्टली कि हाउ डिड यू स्टार्टेड योर करियर इन वॉइस फर्स्ट? सो मेरे पापा एक शो है जो करते थे स्टार प्लस पर, इट वाज कॉल्ड साईं बाबा,
तो उसमें एक बच्चा था श्रवण, जिसकी डबिंग करवानी थी, बिकॉज कुछ कभी कभी शूट जब आप कर रहे होते हो तो वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है, तो पोस्ट प्रोडक्शन में डबिंग में उसको फिक्स किया जाता है. सो दैट आर्टिस्ट वॉज लिविंग समवेयर फार, ही वॉज ऑल्सो अ चाइल्ड, एंड मतलब वो नहीं कर पा रहे थे. सो देन दे वॉन्टेड टू ऑडिशन एंड गेट समवन हु इज नियर बाय एंड हु कुड कम एवरी डे टू द स्टूडियो. तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, ऑल्दो माई फादर ही रियली थॉट कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वेरी इंट्रोवर्ट. एंड पहले मुझे लेकर जा चुके थे वो एक डिज्नी का, आई थिंक कोई कार्टून का समथिंग इट वाज, एंड मैं वहाँ गई बट आई डिडंट से अ वर्ड. मतलब उन्होंने वो मुझे सीन दिखाया, सब कुछ दिखाया एंड सब कुछ देख रही थी, बट माइक पे एक शब्द नहीं निकला. आई वॉज दैट इंट्रोवर्ट. आई वॉज प्रॉब्ली 5-6 years old at that time. तो उसके बाद मेरे अंदर बिल्डअप था, क्योंकि पापा हमेशा बोलते थे, आई थिंक इट वाज his way of using reverse psychology, but he used to always tell me, नहीं, ये नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी. So when I heard about this Shravan wala audition, I was like, I want to give it a go. I want to see. Maybe I'll get finalized. I want to see. And I went for it, and I got selected through the audition. And it was really nice. It was a boost in confidence. And उसके बाद से तो I've been here and there's no stopping. And the first character, as in Shravan, he's a boy. So the first character I lent my voice to was a boy. ओके, तो Yeah. कुछ उनके आवाज में कुछ एक सेंटेंस. अब तो आवाज चेंज हो गई. I was 11 Seven. years old at that time. ओह, Yeah, I was really young. कितने साल से आप कितने साल तक आपने ये वॉइस एज अ वॉइस आर्टिस्ट काम किया है? अभी भी चल रहा है. अभी लास्ट आई डिड one of the big movies. It's releasing in, I think, in September. राम पोथी नैनी की फिल्म आ रही है, आई थिंक. उसमें मैंने मेन हीरोइन का किया है. एंड इससे पहले मैंने आलिया भट्ट का किया था ब्रह्मास्त्र में. उनकी डबिंग की थी फॉर डिज्नी, एंड दैट वाज इन इंग्लिश. तो उसका that's everywhere in Hulu and everywhere abroad. So these are the two recent works, because shoot के साथ में time कम मिलता है, but because I like it so much, I don't feel like leaving it. So whenever leave होता है, या after my shoots, so after my shoots also it becomes tough, but 12 hour की shift के बाद, 3 hour के travel के बाद, but still I love my work so much. I go 2-3 hours and I give my time and I segregate like that, and हो जाता है. सो पर्सनली एज अ वॉइस आर्टिस्ट आपको काम करना पसंद है या टू बी एन एक्टर? बिकॉज Both. दोनों अलग हो गया. both, absolutely. I want to do acting more. I'm more focused towards that, because I think voicing में I have kind of tested all the waters. तो काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया है, बट एक्टिंग में दिस इज़ माई फर्स्ट शो एंड आई हैव डन अ फिल्म, तो इतना ज़्यादा नहीं किया है. सो आई वुड लाइक टू डू मच मोर स्टफ हियर. Okay, so how was your first audition? Like, can you please share the experience कि क्या हुआ था वो टाइम पे? My first audition, I can tell you, ये audition सावी की सवारी वाला जो audition था, I was already doing a web show and I was in Delhi at that time. और वहाँ पर I was not carrying any lights, so there were no proper lights and lighting भी नहीं थी, daylight में भी नहीं shoot कर सकते थे. So that was a bit of a fix, और मैं audition बना नहीं पा रही थी, but because of a lot of pressure and I think deadlines थी उनको देना था, तो I just made an audition, but I think lighting was poor and brief वगैरह भी अच्छे से नहीं हुआ था. So आई गई, बात हो गई, वेब सीरीज वो खत्म हो गई. Then I came back to Mumbai. Then after 2 months I again get a call कि वो सावी की सवारी के लिए री ऑडिशन करना है. अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ. मुझे लगा फाइनल हो गया होगा, अभी शूट स्टार्ट हो गया होगा. I mean 2 months you guys haven't found anybody. So they were like, nahi, but we liked your audition, but we would like to do it with the director and with the creatives in the studio. So we can even guide you कि exactly क्या करना है. वो एकदम rowdy girl नहीं है. She's a very humble girl. She's very traditional. She is in the male dominated field, but वो ऐसा नहीं है कि वो rowdy हो जाएगी. She's very tomboyish. So I went there and audition किया, और 1-2 दिन में finalize भी हो गई. तो I mean, it's
crazy because when I hear from Farman, he was finalized for 3-4 months back, and उनको लड़की ही नहीं मिल रही थी, उनको लड़की मिल ही नहीं रही थी, and I didn't know that I would get the part. I mean that was really interesting. So what was your first reaction जब आप फाइनलिस्ट मतलब फाइनल हो गए थे पूरे शो के लिए? Yeah. तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि it was the show was meant to be for you, like I found out about the story very late, जब बात होना शुरू हुई, जब people told me कि कैसे उन्हें पता चला मेरे बारे में, and because I think our director he saw my profile on Instagram also, और उनको मेरी फोटो भी अच्छी लगी, and he was like ये लड़की इसको ट्राई करते हैं, इसने बायो में एक्टर भी लिखा है, and then people were like इसका ऑडिशन है हमारे पास, and then दिखाया, and then they were like नहीं ये ऑडिशन है तो मुझे दिखाया क्यों नहीं, वापस करते हैं, we'll do a better audition and just call her. So I think it was always meant to be. It's a very interesting story and a journey. And I feel very grateful कि मतलब 3 महीने तक I don't know कितने 200-300 लड़कियाँ I'm sure आई होंगी, but I think I'm blessed that I got the part. फरमान के साथ किस तरह से आपकी मॉक शूट रही? ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम मॉक शूट रहता है तो क्या सोचा था, क्योंकि फर्स्ट शूट टुगेदर विल बी अ मॉक शूट? Yeah, first shoot together is a mock shoot, and मेरी उनसे कुछ भी बात नहीं हुई थी, ना उनकी मेरे से हुई थी. आई थिंक वी आर बोथ वेरी क्वाइट पीपल, जैसा हाय हेलो हो गया था. उनका फर्स्ट इम्प्रेशन ये था कि ही थॉट दैट आई एम सम underage child who has just been casted, and he was like अरे यार ये इतनी छोटी बच्ची ले आए हैं, और मेरी मम्मी भी आई थी शूट पर, so he was like अरे यार ये मम्मी के साथ आई है और छोटी बच्ची को ले आए हैं शूट पर, और अगर रोमांस सीन्स होंगे या कुछ भी ऐसा होगा तो मैं कैसे करूँगा, ये बच्ची है पता नहीं मैच्योर होगी या नहीं होगी, एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड मेरे लिए आई वाज लाइक दिस गाय इज रियली ओल्ड, आई डोंट नो, ही लुक्स लाइक ही इज इन हिज 30s बिकॉज ही इज जस्ट टॉल एंड ही हैज अ बियर्ड एंड एवरीथिंग. बट देन वी बोथ लर्नड दैट we are not, I mean I am not so young and he's not so old, and we laugh about the story. And there's another interesting thing, I think I was doing something with my shoulder, I think मेरे back में pain था during the mock shoots. I was doing this. So Farman was like are you okay, what are you doing? उसको लगा ये पता नहीं इसको क्या deformity है, ये ऐसे क्यों कर रही है. So yeah, it was funny, the first impression was funny. So how's the bonding now? It's good. He's a very good co-actor to work with. He comes on time. He does his lines. He's very cooperative. I think that's मतलब basics भी I think कभी-कभी परेशान करते हैं आपको, तो basics are very clear. हम दोनों का वो अच्छा है, you know, that we are both focused towards the project, and we are both collectively very cooperative, and you know, with teamwork, with the direction team, we try to bring out the best. Okay, as you mentioned कि आपने एक वेब शो भी किया है, now you doing a daily soap. Yeah. So if got a chance to do a reality show or something like, आप करना पसंद करेगी? I never say never, because I don't think हम जो सोचते हैं वैसा हमेशा होता है. मैंने नहीं सोचा था मैं यहाँ आऊँगी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं टीवी करूँगी या सा भी करूँगी. So I like to take things as they come. So I don't have any reservations about anything in life. तो any reality show आपने follow किया अभी तक? किया है मैंने. बिग बॉस बहुत देखा है पहले, अब तो टाइम नहीं मिलता ऑनेस्टली, बट आई हैव फॉलोड बिग बॉस, आई हैव फॉलोड झलक दिखला जा, आई हैव फॉलोड मेनी अदर रियलिटी शोज, बट अब थोड़ा 2-3 साल से इतना देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, बट अदरवाइज आई हैव वॉच्ड.